Good Tell afternoon. me about yourself, Nilesh. Okay. Hello. I'm audible. Yes, yes, yes. Okay. Hello. Hello. Ha. Tell me about yourself, Nilesh. I'm Nilesh. So my name is Nilesh. I'm a recently graduated at Tirupati from ITM University, and that Which my university? ITM Rashtriya Santa Okay, Tukolji okay, Nagpur okay. University. Ha. Uh, in that my graduate and also my degree BCCA. In that degree, I'm learn multiple programming language, Java, C, C++, Java, multiple language, and my degree is a PCCA plus accounting knowledge also. I am also gain knowledge with accounting. So that's the reason. So I'm more understandable data, multiple data, just like on shopping site. So this data like in accountants like data. So I'm easily understand the data, how to manipulate and how to filterize the data. So useful. Have you experienced our freshers? I'm a fresher. Okay. Uh, what are the data types in Python? Data types are sequential data types. So data types are ordered, unordered. Two types of data Uh, types in uh, Python. Order data type just like list, tuple. That data type are uh, sequence data type that they can be changed using the indexing. uh, They are also accessed mm, using to indexing. And second data type is the unordered data type. Just like uh, say this is a unordered data type and this dictionary because dictionary is a semi mutable, so semi mutable data types uh, charging uh, they also changing the value only, not changing the keywords. So okay. that's I also my in my side. So every dictionary is a semi mutable. Okay. Why use else in try exception construct in Python? uh, uh, that's a multiple conditions. So I'm simple condition to this. Just like a divide by zero is Uh, a say to I'm right. Okay. uh, Divided by zero is a exception. So any numerical, in the uh, integer, they can't be divided by zero. First of all, okay. so every time I'm putting the zero for divide anything another value. So anytime my program is return error divide by zero. So try I am using to try catch blocks. So inside the try I'm my full code I'm writing, and after that my condition that are divided by zero I apply that Mm, are not showing to error. This is good. the example. What are decorators in Python? Sorry. Decorators. No? So, Okay. What is swap case? Swap swap case case. function. Swap case are used to just like a condition statement, just like Okay. when they can fit that condition, they can execute this condition. No. So sorry, I will forget. How do you create a variable with integer number? So first of all, I'm creating. Uh, First of all, I declare I'm variable, then assigning with any integer value. okay. Which method can you use to remove any white space from beginning and end of the string? How can you remove white space?
Using I am white space using to replace also replace keyword. So I am adding some quotation that inside I'm one just remove space and I don't then replace. I don't want to use replace function. Then how to remove white space? What's my If I don't want to use replace function, then how to remove white space? uh, also remove one function in keywords. That I will not remind me so it's keywords. Okay, So search. Take you will search. okay. Which method can be used to create uppercase? Oh, first letter full letter man. Character sorry. All letters. All other upper names. And if you want to only first letter, then Capitalization and every letter I want to create I want a uppercase so use title. okay, good. How can you check if all the characters in string are alphanumeric? Do you understand my question? Sorry for that I'm reading something time but If you want to that check all, if you want to check in your string or in your anywhere, uh, your all characters are alphanumeric. सियान का भी So पलटा रहा then, हूँ मैं which सियान function सियान can you अभी आया था use? 2 दिन पहले I हाँ want to checking for the 29 तारीख को for that for loop for first of all every one अभी line by फोन आया line था मेरे को हर्षा for मैडम का execution the prefer I am for loop Yes, we so have for loop, but their built-in function also we have. Okay, you will check. Okay, what is pandas? pandas is a data manipulation for use data retrieving another sources just like SQL, Excel, CSV files that you are used to load your data and transform, filterize and manipulating your data. That for use Python. Also, I'm numerical, just arithmetical equations. Sorry, aggregation functionality. I'm using also Okay. group by columns. Uh-huh. What are the different type of data structure in pandas? Hello, hello. Hello, hello. Huh, Sorry, what? my laptop charging. I'm no, I can't see this. My charging is down. So, Okay, okay, कोई बात नहीं. What are the different type of data structure in pandas? and what na? What are the Hello, different hello. type of data structure in pandas? Data Data structure structure. different types. Mm, I know that it's structure. Uh, ma'am, one hint. Hint. Series and data frame. Series and data frame. Oh, so sorry about that. Uh, Series is what a is one-dimensional array, uh, and second is a data frame. Data frame for loading a data, uh, and so manipulating with also manipulating that data on different time. They want filterizing data also. okay. And what is NumPy? NumPy is a used to there create arrays. First of all, they are inside one-dimensional array, two-dimensional array, and multi-dimensional array also. What is random and randint? Random and random is some difference. Random defined integer value.
And random is only defined 0 and 1. Something. Are you sure? Uh, random, I'm sure. Random 4. I'm sure. Okay. How many type of machine learnings algorithms? Sorry, machine learning. Sorry, two types, supervised and unsupervised. Okay, and supervised algorithm. Which are supervised algorithms? That I am define the values, x-axis, and also provide a dependent dependencies and once the target value. That's a supervised learning. And what is and unsupervised algorithms? Unsupervised, this and also I'm only provide that my data values. The automation they also predict this understanding that value. You want unsupervised, I kind of explain मैं properly. आपको algorithms पूछ रही हूँ. Algorithms Sorry, sorry. कौन से supervised Sorry. और unsupervised? Sorry. So कोई इशू नहीं. आप मशीन लर्निंग अच्छे से एक बार पढ़ लो और बेसिक पाइथन मतलब पाइथन कोड भी अच्छे से प्रिपेयर करो मतलब प्रैक्टिस करो. ठीक है. बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और थोड़ा मेहनत लो. ठीक है. हाँ. So ठीक. मैम वन का क्वेश्चन है. हाँ हाँ बोलो. जो अभी जो आपसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको मेरे अंदर जितने भी मतलब कमियां लगी तो आप मेरे को बता सकेंगे तो मैं फुर्दे में अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊंगा. हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको. हाँ. आप अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट अच्छे कर पा रहे हो और थोड़ा इम्प्रूव करो. अच्छे से बात करने के लिए बात आप जो कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं लेकिन और थोड़ा इम्प्रूव करो. और आपने जो पाइथन का बताया वो बहुत अच्छे से बताया. मशीन लर्निंग में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है. और आपको कैसे जब इंटरव्यू होगा आपका तो आपको कोड भी लिखने के लिए बोलते हैं. तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस कोड की प्रैक्टिस भी करने के लिए बोल रही हूँ. ठीक है. अभी आपका लैपटॉप बंद हो गया है इसलिए आपको कोड नहीं हाँ. पूछी मैंने. तो आप हाँ. उसके लिए कोडिंग की भी अच्छे से आप हैकर रैंक यूज़ कर सकते हो, लीड कोड यूज़ कर सकते हो. तो वो बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आप वो यूज़ करो. ठीक है. प्रैक्टिस के लिए, कोडिंग प्रैक्टिस के हाँ. लिए. हाँ, ठीक है. उसी के लिए प्रैक्टिस कर रही है. बस अभी मेरा हैकर रैंक रेगुलरली चालू है. तो हाँ, मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ लो सब मतलब एल्गोरिदम्स, मैक्स हाँ. एल्गोरिदम, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के डेटा स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं. तो अगर आपको कैगल से वगैरह कुछ डेटा सेट मिलते हैं तो उस पे आप प्रैक्टिस करो. तो उसमें आपको मल्टीपल टाइप के डेटा सेट्स मिलते हैं तो उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए स्कोप रहता है. और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का डेटा किस टाइप से चेक किया जाता है या मतलब एल्गोरिदम्स किस टाइप के डेटा पे किस टाइप के एल्गोरिदम्स लगते हैं. तो वो भी आपको और प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा. हाँ. ठीक है. ठीक है. अभी वैसे मंडे को मेरा इंटरव्यू है, तो पावर BI एसक्यूएल के ऊपर वो दे हायर कर ले. तो आप उसके लिए थोड़ा कुछ मेरे उसके को लिए बता सकते. एसक्यूएल अच्छे से करके जाओ. एसक्यूएल अच्छे से करके जाओ. उसके लिए पावर बीआई भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हाँ. एसक्यूएल भी अच्छे से करके जाओ उसके लिए. हाँ. एसक्यूएल के बेसिक है वो अच्छे से करके जाओ. ठीक है. हाँ. ग्रुप बाय, थैंक्स लॉट वेयर मैम. हाँ. क्लॉज, थैंक्स जॉइंस लॉट. जॉइंस की प्रैक्टिस अच्छे करो. हाँ. ठीक है. ठीक है. थैंक यू. चलो ऑल द बेस्ट. हाँ. थैंक यू मैम. ओके. Hello, हेलो. hello. Can you hear me? हाँ. हेलो. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Yes, my name is Sudarshan Moon. I just have a 2 and 3 years experience in my like MIS currently right now. इन विच फील्ड. That is MS Mad हाँ. MIS Madman Inform System MIS.
Okay, okay. And Yes. what is your designation? Right now, MIS means just data manipulation, data. I have work in Excel right now. Acha, you are working in Excel. Yes. Okay, okay. तो अभी आपने क्या पाइथन पढ़ा, मशीन लर्निंग हाँ, पढ़ा? पाइथन पढ़ा है, मशीन लर्निंग पढ़ा है मैंने. Okay, okay. So tell me about Python. Python is a simple and easy language, so it is a free language also. We can access it free data, and we can connect with the multiple data source uh, like SQL and other things. Okay. Hmm. How many data types in Python? Data types are three. That is strings, first string, float and integer. Okay. What is the use of slash and double slash in Python? Slash and double slash. The slash use divided by, and double slash is double slash we already use for Uh, the slash na. slash, double slash. डबल स्लैश रिमाइंडर निकालने के लिए. Okay. What is BODMAS rule? Bodmas rule, that is Bodmas means math. Bodmas means first multiplication, then sorry, division, multiplication, and Bodmas uh, division, multiplication, addition and subtraction. Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल भी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद वो एडिशन, Bracket. तो डिवीजन. Bracket. हम्म. Bracket के बाद ब्रैकेट के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन. एक्सपोनेंट भी था उसमें. हाँ, ब्रैकेट के बाद किया है. ब्रैकेट के बाद कर लिए ब्रैकेट ना, ब्रैकेट के बाद अब एडिशन हो जाता. एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंशियल. यस. हाँ. What is filter? फिल्टर, जस्ट फिल्टर, जैसे कोई कंपोनेंट होंगे वहां से अपन फिल्टर करना है अपने कोई चीज को. हाँ. जैसे भी कर लिया, आप कोई लिस्ट होंगी, लिस्ट में से कोई फिल्टर, अब जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर अपन को ये चाहिए तो उसमें से अपन फिल्टर कर सकते हैं. कैसे? बेसिक सिंटैक्स बताओ कोई भी. फिल्टर का, फिल्टर जैसे अपन एक लिस्ट होगा, जैसे लिस्ट में अपन जो नंबर्स वहाँ पे दिए अपने को. ओके. तो जैसे आपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ता है. वेरिएबल में उसको आपको एक फिल्टर का ऑप्शन आता है. जैसे वेरिएबल बना दिया अपने बी का, तो जैसे एक लिस्ट है, लिस्ट में डॉट फिल्टर, और वहाँ पे अपने को जो लिस्ट फिलअप करनी पड़ती है वो प्रिंट करना पड़ेगा उसको फिल्टर करके, जो अपने वैल्यू चाहिए जाता है. पता है? लैम्डा फंक्शन पता है? हाँ, लैम्बडा फंक्शन पता है. फिल्टर फंक्शन पता है फिर? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है. लैम्डा फंक्शन बताओ. लैम्बडा फंक्शन एक सिंगल वैल्यू, जैसे अपने को एक सिंगल वैल्यू मिलने के लिए अपने जैसे अपन लैम्बडा यस किया, जैसे उसमें सिंगल सेंटेंस में अपने को आउटपुट मिलता है उसमें. ओके. हम्म. बेसिक सिंटैक्स, एनी सिंटैक्स ऑफ लैम्डा. एडिशन का बता दो. लैम्बडा जैसे वेरिएबल लिया. हाँ, वेरिएबल अपने एक्स लिया इज इक्वल टू लैम्बडा स्पेस 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 वाई, जैसे अपने एग्जांपल एक्स ले लिया, कॉलन कॉलन, जैसे ए प्लस बी. ओके. ए प्लस बी की अपने, हाँ, और उसको प्रिंट करना है जैसे वेरिएबल को अपने को वेरिएबल प्रिंट करना है तो आपको आउटपुट मिल जाता है उसमें. प्रिंट कैसे करोगे फिर? प्रिंट प्रिंट दो वेरिएबल का एडिशन हो रहा है तो प्रिंट करोगे तो कैसे मिलेगा आउटपुट? सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ. चलो ठीक है. एन्यूमरेट फंक्शन बता दो. इन्यूमरेट हाँ, फंक्शन.
न्यूमरेट मुझे अभी याद नहीं आ रहा मिनट का न्यूमरेट का Okay, okay. हाँ How many type of machine learning? मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग टाइप्स मशीन लर्निंग टाइप Machine learning types. नो नहीं पता Okay. Do you know supervised, unsupervised? सुपरवाइज अनसुपरवाइज नहीं नहीं पता Okay. सॉरी Any algorithms? किसका algorithm Machine learning algorithms. मशीन लर्निंग का algorithms नो नहीं नहीं आता है Okay. What is OOPS? oops means ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हाँ. तो जैसे आप उसमें क्लास रहता है और क्लास और सॉरी क्लास रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है उसमें तो आपको क्लास को एक बार क्लास बनाना पड़ता है किसी चीज का और उसको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अपने को क्लास को कॉल करने के लिए हम्म तो एक क्लास ही रहता है उसका ब्लूप्रिंट रहता है और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो मैं स्ट्रक्चर रहता है उसको कॉल करने के लिए अपने को क्लास को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है वो उसको कॉल करता है फिर उसका फंक्शन पूरी जो उसका फंक्शन है क्लास ऑब्जेक्ट में आ जाता है पूरा What is encapsulation? encapsulation means encapsulation 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 means पर्टिकुलर जैसे कोई आपको देखो ये करना होता है आप लोग एट्रीब्यूट और ये था ना इसमें यूजिंग एट्रीब्यूट और ये मेथड रहता है उसमें एक बार पढ़ लो आप अच्छे से वो. ठीक है. हाँ हाँ Type of data splitting. टाइप ऑफ Data splitting in machine learning. डेटा स्ट्रीम मशीन लर्निंग Splitting. नो Data splitting. स्प्लिटिंग डेटा स्प्लिटिंग जैसे नहीं. दो स्प्लिटिंग में दो रहता है ना कि आपने दो स्प्लिटिंग रहता है हम्म. टू टाइप्स रहते हैं जैसे 70% अपने को इसमें पास करना पड़ता है 80% और 20% और 20% जैसा इसमें पास करना पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? याद वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे ओके. मीन मीडियन मोड पता है? हाँ व्हाट इज मीन? मीन्स एवरेज मीन्स एवरेज टोटल एवरेज जैसा उसका रहता है तो नंबर ऐसा उसका मीन डिवाइड बाय जैसे नंबर है उसका टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर्स व्हाट इज मोड? रिपीटेशन नंबर ऑफ रिपीटेशन जितना जैसे नंबर होंगे जितना रिपीटेशन होगा उसको मोड कहते हैं जितना मैक्सिमम मोड ये रहेगा रिपीटेशन जैसे नंबर है जैसे कोई नंबर 2 बार ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको मोड बोलते हैं ओके. और मीडियन? मीडियंस जैसे एक 1 to 10 रहता है तो जो बीच वाला वैल्यू रहता है जैसे 1 to 10 हाउ 1 टू to 10 कैलकुलेट मीडियन ऑफ इवन नंबर? इवन नंबर ना जैसे ये टोटल नंबर ऑफ इवन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ओके. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस म्हणजे जैसे पेरेंट्स रहता है उसका जो जैसे 2 क्लास बनाया आपने ओके वो क्लास 1 क्लास 2 जो फर्स्ट क्लास रहता है उसका जो फर्स्ट क्लास का जो सेकंड क्लास में अपन करते हैं उसको जो वैल्यू अपन पैरामीटर पास जैसे फर्स्ट सेकंड इसमें फर्स्ट का पैरामीटर पास करना पड़ेगा क्लास में तो पेरेंट टू चिल्ड्रन चिल्ड्रन टू पेरेंट्स जैसे ये होता रहता है उसमें तो जैसे अपने फर्स्ट लास्ट जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपन तो जैसे अपने फर्स्ट चिल्ड्रन को क्लास अपन कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक जो फर्स्ट पेरेंट्स का वो भी कॉल हो जाता है उसमें और पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन जैसे सेम थोड़ा उसपे जैसे अपन तीन जैसे वेरिएबल बनाते हैं जैसे क्लास में जैसे एग्जांपल अपन एनिमल का वेरिएबल ये बनाते हैं अपन ठीक है। जो जैसे उसमें सेकंड टाइप अपन क्लास में कैट का ही बनाते हैं और डॉग को बनाते हैं। तो जैसे अपन डॉग को एनिमल को कॉल कर एक साथ तीनों कॉल होता है वो। हम्म, जैसे एक एग्जांपल हम क्लास का बना दिया अपन ने और क्लास में जैसे अपन ने जैसे सिंपल है उसका क्लास का साउंड बना दिया एनिमल का साउंड। तो सेकंड इसमें अपन कैट का बना दिया अपन ने ठीक है। और थर्ड इसमें डॉग का बना दिया। तो एक साथ अपन तीनों को कॉल कर सकते हैं इसका। एक सिंपल वेरिएबल बना के तीनों को कॉल कर सकते हैं उसमें। पक्का हाँ एक बार पढ़ लेना ठीक है अच्छे से। ठीक है। दर्शन ठीक है सुदर्शन, थोड़ा मशीन लर्निंग अच्छे से पढ़ो। मशीन लर्निंग और पाइथन भी थोड़ा बेसिक आपको आता है, थोड़ा हम्म इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ो और मशीन हम्म लर्निंग अच्छे से करो ठीक है। हाँ चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बाय।
but other up to 10 will be printed. Okay. And what is continue? Ma'am, that's only continue means Okay, there. Okay, okay, okay. And what is pass? uh, pass is like uh, we leave that value something. I can't recall the Okay. pass. Sorry. When you don't want to execute code, then you use pass statement. Okay. Oh, sorry, sorry. Oh, okay. Good. What is generator? Generator. Uh, 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 sorry, ma'am. Generator. I don't recall okay. right now. What is oops? Ma'am, OOPS is object-oriented programming language. Uh, that which basically it, it is a means OOPS is a function where such as we create classes on objects in OOPS where class we define a class such as school and objects could be the name of the children's can be objects of that classes and these classes are also inherited and called out by the friend function and all Okay. that. What is inheritance? Ma'am, inheritance is like we inherit the objects from a parent class to the child class, such as student data to be inherited into the teacher's column. So it can be Okay. called as an example. Inheritance. Okay. And what is polymorphism? Polymorphism. Okay. Mm, polymorphism. Sorry, ma'am, I can't. Polymorphism. Okay, okay. Not issue. Uh, Tell me about something string functions, built-in functions of strings. Ma'am, the string are uh, as I said, string are mutable, so it can be changed. So there are some of the strings function. Uh, these things means in string we can means in string slicing we can use it. Then also there are joining and splitting method in strings Okay. to Can you share parse. your can you share your screen? Ma'am, I joined on mobile. Okay. Okay, ठीक है. Sorry. Means I my computer doesn't have that camera, so I joined from it. Okay, okay. Difference between split and split. Split and Strip. ma'am Split and strip. Hmm. split and strip. Okay. Ma'am splitting means we suppose we have a string. Suppose my name is Ashmit and Hmm. if I give a backslash in between the string anywhere and I enter suppose a equals to a dot split in bracket slash. So the slash will be for the splitting of that tokens. Okay. And strip. So, uh, st- sorry, I'm couldn't recall the split. Okay, okay. Not issue. So what is um, data analysis? Ma'am, data analysis is a process, or we can say it is a way where we can analyze all the data. We can review it, clean the data which has come to us, and make a statistics uh, on behalf of the data which we have got. Uh, Um, means suppose any company needed a forecast of the uh,
previous year to till date sales. So by using various methods of cleaning and extracting of data, we can provide all the statistics uh, to the company. That can be called as data analytics Okay. somewhere. What are the different type of machine learnings? Ma'am, there are supervised and unsupervised machine learning. Okay, and which algorithms are supervised algorithm? Uh, Supervised में Supervised algorithm. K nearest neighbor we can use. Uh, Also regressions, logistic regression and linear uh, regression. are you sure? Yes, yes, ma'am. And unsupervised algorithms? Supervised, it's we make clustering algorithm is used, Uh, 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 and all the association rules also. okay. Uh, that's why I am means, we can use sklearn for that means. So I kind of prefer only that. Uh, explain sklearn then. Ma'am, sklearn is like what is it? Mm, means in sklearn, like in sklearn we take a data set, we load the data set uh, from sklearn, and uh, sklearn data input. Then we import data from the sklearn. Then to find the mean, we use the k-means in the k-means in clustering, uh, and we make a cluster patterns, and we map all that data and plot into the graphs. You read properly, okay? Not a issue. Sorry, You read I not a issue. confused. हाँ ओके ओके कोई बात नहीं आप एक बार थोड़ा पढ़ लो अच्छे से वो हो हाँ जाएगा मैम. ठीक है टाइप ऑफ डेटा स्प्लिटिंग्स Type of data splitting. हाँ Data splitting. Uh, uh, Ma'am, I think I did understand the question is this type of data split. ट्रेंड स्प्लिट याद है Yeah, basically, no, ma'am, I'm sorry. एल्गोरिथम अप्लाई करने के पहले हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं सबसे पहले डेटा लेंगे, फिर उसमें से सब कुछ पहले डेटा को क्लीन करेंगे, नैन वैल्यूज को हटा देंगे, उसके बाद नैन वैल्यूज को हटाने के बाद एक पूरा कह सकते हैं उसको उस पे मीन मोड मीडियन वगैरह सब कुछ वो लगाएंगे, और नैन वैल्यूज को फिल करने के लिए मीन मोड मीडियन सब कुछ लगाएंगे, फिर उसके बाद क्रॉस टाइप परफॉर्म करेंगे, क्रॉस टाइप, और फिर ग्रुप बाय करके पूरे सबको मिक्स कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन दी जो डेटा होगा उसके हिसाब से। एक बार प्रॉपर और पढ़ो आप प्रोसेस पूरी मुझे चंक्स में थोड़ा थोड़ा याद है कि क्या क्या है, मतलब थोड़ा आगे एक पीछे बार याद है। हाँ एक बार प्रोसेस पढ़ो आप वो हाँ मैम. ठीक है क्या बोलते हैं मॉडल इवेल्युएट कैसे करते हैं मॉडल इवैल्यूएशन. हाँ,
इससे पहले मेथड से, काफी मेथड से हैं। तो क्या हाँ use मतलब जैसे मॉडल एक कोई भी मतलब इफ वी टेक एनी मॉडल आप सो कोई भी एक नाम भी बता देंगे तो भी चल जाएगा मॉडल इवैल्यूएशन के लिए। मॉडल इवैल्यूएशन का क्या था? मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, याद है? हाँ सॉरी, हाँ रूट मीन स्क्वायर एरर और एल्बो मेथड भी थी हाँ, और रूट मीन स्क्वायर एल्बो मेथड अपरायरी वो एक था अपरायरी एल्गोरिथम टाइप्स। हाँ, बस ये तीन याद है। अच्छा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स पता है? हाँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, हाँ मतलब व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स? हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को ऐसा समझ सकते हैं, सपोज 2 by 2 की ग्रिड में दो वैल्यूज है। सो ऊपर की वैल्यू ट्रू और नीचे की फॉल्स हो गई तो फर्स्ट इसमें पहले इसमें फॉल्स आएगा, फिर सेकंड इसमें अगर ट्रू ट्रू होगा तो उसमें ट्रू आएगा और नीचे के थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे दोनों वैल्यूज की अगर प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है उसका पता है? प्रैक्टिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताया था प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है। नहीं आप एक याद बार है। अच्छे से पढ़ लो, सर ने सब बताए हुए हैं ये सब चीजें। हाँ सर ने बताया, वो मैं थोड़ा हाँ, घबरा आप के एक भूल बार, गया। नहीं कोई इशू नहीं, आप घबराओ मत, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है? हाँ थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत है आपको, बाकी सब ठीक है। ठीक, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लो, सब सर ने जितना दिया है उतना पढ़ लिया तो भी काफी है। ठीक है? ओके मैम, चलो, थैंक यू। थैंक ऑल यू द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, बाय। Hello, Sonali. Hello, ma'am. Tell me about yourself. Ma'am, I'm Sonali Radke. I am studied in BSc in Computer Science. Okay. I am completed my BSc in Amravati University at Vani. I have 1.5 year experience on company in office work, which is taxes, invoice, purchase entry, accounting with GST. That is Okay. Then why you change your field? Account after accounting, are you coming in data analysis? Why? Hello. हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, 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 Hello, sorry, आवाज sorry, ma'am. आवाज आ हाँ रही हाँ है आपको? ओके, हाँ मैम आप आ रही ओके, आपको अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस है, देन व्हाई आर यू चेंजिंग योर फील्ड? because ma'am I'm interested in means computer company means technical company, but Okay.
Yes. सो आप क्या पाइथन पाइथन प्लस मशीन लर्निंग पढ़े हैं, एसक्यूएल भी पढ़े? हाँ मैम। ओके, सो व्हाट इज पाइथन? हेलो, Hello. Yes ma'am. व्हाट इज पाइथन? Python is a generally coding language, means programming language, and it was created by Guido and Rossum in and released in 1991 Hmm. in Netherlands. Hmm. And it is a Python syntax is very easy to English subject man. Okay, for to comment, which symbol we can use in Python? Symbol हाँ, means ma'am syntax print hello world. कमेंट करने के लिए कोई भी अगर कोड को हमें कमेंट करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं पाइथन में, या हमें कमेंट लिखना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? Print function ma'am. नो, हैश सिंबल से हम कमेंट करते हैं। Sorry, hash. ओके, डिफरेंट बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी? Basically, set is a mutable data type. Means it can be changed or modified. And dictionary is a semi-mutable data type. Means in dictionary is immutable data type. Means it cannot be changed, but dictionary's value it can be changed, ma'am. ओके, हाँ। व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? Um, list is also mutable data types. व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? Comprehension. ओके, व्हाट इज लैम्डा? Lambda is a mathematical function. Sorry, ma'am, I'm not too aware. ओके, व्हाट इज स्लाइस? हम स्प्लिट क्यों यूज करते हैं? व्हाई यूज स्प्लिट इन स्ट्रिंग? Means partition करने के लिए गिव एनी partition करने एग्जांपल, के लिए use करें. गिव एनी एग्जांपल। Means concatenation means ma'am व्हाट इज क्रॉस tabulation? sorry ma'am, I'm not aware. Okay, how many type of errors? Syntax Uh, syntax error. uh, what is interpreter?
And interpreter means, for example, Python is a interpreted language. It is compiled because it is compiled by uh, line by line code, debugging by errors. That. Okay. Difference between append and extend. Append method is uh, used to adding. Mm. And extend. And extend. Now I don't remember now. Extend is used for concatenate one list to another list. Okay, ma'am. Okay. I used pandas. Panda is a Python library, and Panda stand for panel data. Mm. Also, Panda is because Panda uses used for Mm. analyzing data. So that's why Panda Mm. is in Python. Okay. How to read CSV file in Python? Uh, df is equal to pd dot read csv Okay. in a bracket the file name. Okay. Explain any algorithms. This is जो आपको अच्छा लगता है या आपको पता है अच्छे से वो. Ma'am, in machine learning, there are two algorithm, supervised and unsupervised algorithm. So KNN is supervised Algorithm algorithm. machine type of machine learning. Two type of machine learning. Yeah. Algorithm तो बहुत सारे हैं. Mhm. हाँ. Okay, ma'am. Okay. And KNN is a simple supervised algorithm. हाँ. KNN stand for K nearest neighbor, हाँ. and KNN is used for analyze data. Hmm. Also, uh, K means unsupervised algorithm. हाँ. K means unsupervised. मैं समझी नहीं. Yeah. In machine learning, K means unsupervised algorithm, ma'am. Okay. आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सब कुछ. ठीक है. जी, Okay. चलो. Thank you. welcome, All the ma'am. best for your next bright future. Thank you, ma'am. Thank you very much. Hello. Hello, ma'am. Tell me about yourself. Hi. My name is Akshay Umade. I have completed BE from Sitna College of Engineering and Technology, Amravati, and I do have an experience of 7 years. And out of seven, I have been working first 3 years as a technical support engineer, and later 4 years as a mainframe batch operator. Presently, I am working at HCL Technologies, Nagpur, SCL with resignation. as a What is senior designation in analyst. SCL? Analyst. As a senior analyst. Yes. Okay. Which tool are you using there?
So we are using IBM mainframe tool that is using the ZOS system, which is ESP and CA workstation. They are used to perform the batch operations, and we have to restart, force complete the jobs, and contact the on call if they are failed, and investigate the errors, and then we have to reach out to them through email and calls. Okay. Then why are you doing Python plus machine learning? So I am interested in data analytics, and previously I have knowledge of core Java, and presently the data analytics industry is also on have high demand, and I want to learn these new technologies. So using Python and Power BI, SQL. So I am interested in that. That is the reason. Okay, okay. Then what is Python? So Python is a dynamically interpreted language that is used mostly in data analytics, and that is used for like web with Python. We have different like platforms. When we use them, then the industry will be different. So for example, Python plus like Pygame, that will be for game development. Python plus Pandas, that will be for data analytics. And so similarly, we have NumPy also. So using them, we have different things to achieve. Okay. How many data types in Python? Data types in Python, we have list, tuple, and Mhm. dictionary. Okay. So Okay. Okay. Difference between list and tuple? so in list, there is a syntax difference, and in list we use the square brackets, and in tuple we will use the round brackets. Mhm. That is the syntax structure. Only this difference and not any other difference. Uh, so Okay. What is lambda? what is Lambda. lambda? That I am not aware. Okay. What is swap case function? Swap case function. Hmm. Uh, so in generally we used to swap two variables and values among them. So that we can use as a coding part regarding swap case No, no, function. no, 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 no. You can read. Okay. Okay. Hmm. Uh, what is range function? Range, they are used to create a particular uh, uh, range that can be have a start and end limit. So if we define range 9, so it will generate our values from 0 to 9. Okay. What is namespace? Namespace are there are global and local namespace. Uh, The variables and the predefined variables used in Python, when we use them, they are referred as global spaces. So they can be global local namespace or global known namespace. okay. What is pandas? So pandas is a library that will be used uh, when we have
that is used in data analytics. Uh, हेलो Yes, हेलो ma'am. आवाज आ रही है आपको? Yes. ओके. What are the different type of data structure in pandas? Different type of data structure. Hmm. Mm, not aware, ma'am. Okay. What is series in pandas? Series in pandas. Hmm. Uh, How uh, to read data from CSV file? so we have to use the data frame, Hmm. and using that we can read the files. How to read which function can use for this? How to read this file? So using the data frame arrays. Okay. How many type of machine learnings ML? uh, Types of machine learning. Uh, Um, what is NumPy? uh, so uh, that will be used along with Python as a numerical computation, and which can handle multi-dimensional array. Okay. Which project have you done in during course in your Um, internship? uh, we were having example only. So in Power BI, they used to provide us how to load the data, work on visualizations, and we do have a project related to the sales. So the sales data will be present here, and we were working on the that data, and that we use in Power BI also, and have the visualization related to that data. Okay. ओके अक्षय, Yes. थैंक यू. थोड़ा आप पढ़ाई और अच्छे से मतलब पाइथन और मशीन लर्निंग में थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करो और प्रैक्टिकल थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली थोड़ी सी इम्प्रूव करो, मतलब हैकर रैंक वगैरह हो सकता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ये करो, प्रैक्टिस करो तो और आपको अच्छे से नॉलेज आ जाएगा. ठीक है. Yes. ओके. ऑल द बेस्ट. Yeah. Thank you. ओके. हेलो आस्था. Hello, good evening, ma'am. Good afternoon. Tell me about yourself, Astha. Yes. My name is Astha Tandale. I am pursuing BTech from GHISM College of Engineering in of branch Computer Science. Hmm. I am from Nagpur and my hobbies are drawing and sketching. What is your hobbies? Drawing and sketching. Okay, huh? Hello.
Yes, ma'am. What is Python? Python is a programming language which is Uh, used for multiple purposes to develop a website. It is also used for machine learning purposes and data handling. okay. How many data types in Python? 5 data types. Uh, Those are uh, integer, string, uh, uh, float, uh, tuple, list, set, dictionaries, uh, frozen set, uh, etc. okay. What is lambda function? Lambda function is an anonymous function which is generally used when we have a short operations to perform. What? Lambda functions are anonymous functions which Hmm. are used to perform short operations. Okay, and what is map function? Um, Map function is used when we have a iterable to perform the function. Okay, what is swap case? What is swap case function? I'm not able to recall this. Huh? I'm not able to recall this. Difference between for loop and for loop. Sorry, ma'am, your voice was breaking. What difference between for loop and while loop? For loop is used when we have to uh, Uh-huh. iterate any values until the case is given, and while loop is used when we have a condition given, till that condition we have to iterate it. Okay. What is break, continue, and pass? Break is used when the when we have to discontinue the uh, code, and continue is used when we uh, want to just uh, skip the one line of a code and continue the other code lines, and pass is used when we um, pass is generally used in functions when we don't write the code there. Don't write the code. Yeah, we are writing the code, but we don't execute. When we don't want to execute this code, then we use pass. Yes, yes. Okay. What is enumerate function? Enumerate function returns the index and the values at the same time. Index and element. Yes, values. Uh, okay, values, right. Uh, how do you create a variable with floating number? By writing the uh, float keyword. Okay. Uh,
How many type of machine learnings? There are three types of machine learning: Hmm. supervised, unsupervised, and semi-supervised. Okay. How many supervised algorithms? Supervised algorithms are regression and regression, k nearest neighbor, Uh, um, logistic regression, etc. and unsupervised algorithms. Unsupervised include clustering and association. Explain any one algorithm. In clustering, when we use k-means clustering, Hmm. here a group of clusters are formed, which with the similar properties, and the one which we want to predict, the in k nearest neighbor, centroid is calculated, and the one which is closest to the group is considered in the cluster. Okay. What is feature scaling? Do you know feature scaling? Normalization and standardization. Normalization and standardization is used to uh, ground down the values to in the range of 0 to 1 for Uh, uh, for proper for for proper to bring all the values in the same scale. okay. Okay, आस्था. Yes. आप अच्छा है, अच्छा मतलब दिया आपने. लेकिन और थोड़ा अच्छे से मतलब मशीन लर्निंग पे थोड़ा और फोकस करो आप, ठीक है? Okay. हाँ. और कोडिंग का प्रैक्टिस करते रहो. हाँ मैम. हाँ. ओके Thank आस्था. you. ठीक है. Thank ऑल you. द बेस्ट. हेलो. Hello. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून भाग्यश्री. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. Hmm. Myself, Bhagyashree Deshpande. I have completed my graduation from Sadabai Raisoni Women's College, SNDT University, Mumbai. And currently, I am studying Which is data analytics at Campus Academy. branch? What is your branch? Hello. What is your branch? I'm from BC. I'm studying BCA. BCA. Okay, okay. Uh, Uh, Hello. next. हाँ हाँ बोलो ना. I'm studying BCA, and from SNDT University, Mumbai, and I'm in final year. And Now I'm studying data analytics in Kakers Academy. Hmm. So tell me about what is Python? Hello.
Hello, Hello. Nageshri. Huh. What is Python, Nageshri? Hello. Ma'am, can you hear me? Hello. Python is a high-level interpreted and general-purpose programming language known Hmm. for its simplicity and readability. Hmm. Created by Guido Rossum and Hmm. and first released in 1991. Okay. Key features, talking about key features, that is easy to learn, that is interpreted language, that is code is executed line by line, Hmm. dynamically typed, and it is cross platform. So we can run on various operating devices including Windows, Mac OS, etc. Hmm. um, Open source and community support is there. uh, Hmm. um, and it is object oriented and functional. It supports programming, including object oriented and procedural also. Okay. What is slicing in Python? Hello, What is slicing? Slicing. I can't hear you, ma'am. Please, can you repeat? What is slicing in Python? Slicing is a technique used to extract portion of a sequence, like a list, like a string or a tuple, by specifying range of the indices. Okay. What is Uh, syntax? Syntax. Um, uh, it refers to a set of rules or a structure that defines the code. Like start, Uh, aim, and step. This is basic syntax. like Okay. print. Yes. What is namespace? Um, What is um, namespace? Namespace. Namespace can be namespace is a container or a context in programming that holds collection of identifiers, like functions, function names, variable names, class names, Uh, 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 maps, corresponding uh, objects, uh. uh, What is map? su- such as Hello. maps. Um, map is like a geographical description, or map is a function, that a built-in function used to Uh, apply a given function in each item in an iteration, such as uh, list, tuple, string. uh. Um, Give any example. uh, um, Example of map, Uh, like can single you write? iterable, like hello. If possible, you write a code for map. Can you Yes, ma'am. share share your screen and write a code for this? Yes.
Mm, शेयर हो रहा है स्क्रीन? yes, ma'am, I'm trying. Hmm. And is it visible? Yes. Give you some list. Uh, one sec. Ma'am, single iterable or multiple iterables? Single iterable. Okay. Okay. You try next time, ठीक है? Hello? 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 Hello. Hello. हाँ आप ट्राई कर लेना ठीक है बाद में. Hello? Ma'am, I don't know what's Any the problem. okay, not a big issue. You will try, okay? Hello? Yes, ma'am. Explain any supervised algorithm. Anyone. Mm, uh,
Firstly, tell, Um, uh, from my choice, yes. I would like to explain linear regression. Uh, One of the most common method and simply supervised learning algorithms in linear regressions. It okay. is used for predicting continuous targets or variable based one or more input features. Mm, Um, Senior linear regression is also of two types, like simple linear regression, multiple linear regressions. uh, Linear regression finds the relationship between different variable and mm, one or more independent variable by fitting a linear equation to the observed data. mm, The main goal is to basically model the relationship using straight line. okay. For a simple linear regression with one independent variable like x and a dependent variable like y, the Why? relationship. Uh, Mm. Hello. Hello, hello. Yes, ma'am. Y is the dependent variable and x is the that is target, and x is the dependent variable, like it is a feature. How can you evaluate this algorithm? um, like ma'am, the for multiple regression or what? Say, Uh, Linear regression. How can you evaluate? Uh, Hello. uh, hello. How can you evaluate this algorithm? It is good or not? It is okay. How can you evaluate? Mm, uh, ओके पढ़ लेना इसके mm, बारे में थोड़ा ठीक है yes. Yes. हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लॉट्स How many type of व्हाट इज मैटप्लॉटलिब matplotlib? Ha- हेलो Hello. हाँ Hello. व्हाट इज मैट हाँ बोलो ना Am व्हाट इज I मैटप्लॉटलिब audible? यस यस Matplotlib is a powerful and widely used data visualization library in Python. Um, uh, it provides object-oriented API for embedding plots into applications. Like it can be used to create a wide variety of plots and graphs, such as line plots, bar charts, histograms, scatter plots, and etc. Um, it has versatile plotting. Like Matplotlib supports a very wide range of plot types. Um, Customizability is there, compatibility, interactive, because in Jupyter Notebooks, Matplotlib supports interactive plots that can be zoomed or panned. Uh, Exporting is available, like plots can be saved in various formats like PNG, PDF, etc. Um, Common types of plots that are used is line plot, bar chart, histograms, ओके pie chart. ओके Um, it is particularly useful for visualizing data trends, exploring relationship between variables, communicating insights through
to graphical representations. What is scatter plot? Um, uh, uh, what is, What is uh, scatter plot? um, scatter plot is also known as scatter diagram. That is a type of visualization that displays value for two continuous variables. Like Mm. mm, uh, it uh, like it shows relationship between two variables. Each point on a plot represent data point with its position determined by values of both. Okay. How many type of data splitting? Uh, uh, ba- uh, mm, um, ba- Basically, there are two types of data splitting: uh, train test split and train validation test split. Okay. Train test split is like simplest form of data splitting. The data set is randomly divided into two parts. Okay. And train validation test split is like this technique splits the data set into three parts: Uh, uh, training set, validation set, and test set. okay. Uh, Which project have you done and in your yes, internship? ma'am. Which project have you Yes, done ma'am. in your internship? Ma'am, Doing. actually, Okay, okay, bolo. I am learning, and I have not built a strong project, but I am in Okay, okay, my work is okay, in okay, progress only. ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप, और थोड़ा मेहनत लो। ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. ओके।